Want to thank you all for your support to my previous video, and the support was awesome. And I just say that keep supporting me because your support actually inspires me to make more meaningful videos. And today is Sunday, so it's 8 o'clock in the night, and I'm shooting this video. So today I want to take a topic which has now become a red alarm for the society, and the topic is suicide. I get amazed when I was reading the WHO data that almost 8 lakh people used to commit suicide every year. It means in every 40 seconds, one person used to die due to suicide, and that is pathetic. And the first part of this is that among those 8 lakh people, the most of the persons are youth. They are in the age group of 15 to 29, an age where their soul should be vibrant, they should be full of energy, full of enthusiasm. But in spite of that, they are under depression. They are committing suicide, and it is really, really bothering me. It's really making me worried. So I really think that this problem needs to be addressed very seriously, and as seriously as we can. So we will discuss this problem in detail in our coming episodes. So I will dedicate at least 2 to 3 episodes to this problem because it is really a serious problem. For a country like India, where the population 65% is youth, this problem becomes more intense. And like in the most of the metros nowadays in India, people are in depression. They are taking antidepressant medicines, and also they are committing suicides. And this is not about the big cities only. It's in small cities also. This problem is expanding its domain, and that is really, we need to worry for this. So while I was seeing this different cases of suicide, what I have seen is that their basic reason of suicide is failure. When the people get failed in their career, in their love life, or in any aspect of life, they start believing that their dreams are shattered and there is nothing left, and their world is going upside down, and they start believing that what they will do in this earth, how they'll spend their time. And so in spite of pulling off this life, they should better commit suicide, and they just quit. And sometimes people used to commit suicide due to strange reasons. I was seeing a boy. I was reading a story of a boy who just committed suicide because he was not good in English. He used to think that without English he cannot get success in the life. तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है ना, वो बस एक लैंग्वेज है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक आर्ट है. और आपका कम्युनिकेशन स्किल और सक्सेस कहीं पे भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता. आप एग्जांपल देख लीजिए बिहार के लिए, जहाँ पे बिहार देश भर में सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स देता है, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, बट दे यूज टू क्वालिफाई द UPSC. वो UPSC क्वालिफाई करके अच्छे पोजीशंस पे हैं कंट्री में. सो इंग्लिश शुड नॉट बी द हर्डल इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस. सो there are different issues, as I have said, which leads to suicide. So among those different issues, one issue I want to take today is love life. When youngsters get fail in their love life, they get betrayed or dissed or dumped. They start believing their life has lost their meaning, its meaning, and they better to commit suicide. And this is a problem that almost every youngsters in some part of their life used to go through, that is emotional trauma or emotional vulnerability. So before going deep in this topic, I want to tell you a story, and by that story we will try to figure out that what is the real reason in this kind of love affairs that actually triggers somebody to commit suicide, and how we can cope up with that. So there was a boy who was very reserved kind of person, but at the same time he was a man with a golden heart, and he was very good in study. So he was doing graduation in chemistry honors, and he has only one dream, that he want to qualify UPSC. He wanted to become an IAS officer. So after completing his graduation, he's joined post-graduation in chemistry, and in the first year of the post-graduation he appeared for the UPSC exam, but unfortunately in that preliminary examinations, last few minutes of the preliminary examination, he get nervous and he committed some blunders. So when the result came out, he was not qualified for the mains examination. So at that time, the boy was absolutely shattered. He was just broke down into tears.
and he was under depression. But apart from that, he completed his post graduation, and his parent used to tell him that you should try one more time for the UPSC, because there's four times the four attempts used to be for the general quota at that time. Right now it is six times for the six attempts for the general quota. So the boy was actually under depression, so he was not in the condition to sit once again in the UPSC examination. So just to get out of that trauma, he joined a private firm. In that private firm, he worked for almost 6 months on a 6 month, and during that 6 months, he was gradually building up his confidence and trying to get out of that trauma. So one day, while he was sitting in the cafeteria, he met a person, and the person said that why don't you join in a gym as a trainer, because you are having a nice physique. So the boy said, how much I will get for that? So he said, after your office hour, you can come to the gym, and you can and give the training, and for that you will get a good amount of money. So the boy joined the gym, and during his gym, one day he met a girl, and the girl was very nice. She came to him and asked that she was new there, and she just wanted to know that how to perform cardio exercises, and the boy guided the girl, and that's how the first conversation begins. And after that, the girl gradually shows her interest in the boy, and the conversation just started one day by day, from first direct conversation, then WhatsApp, then Facebook, and then phone conversation. They just keep on talking to us. And one day the girl said the boy that she was in love with the boy. Actually, the boy was not ready for the relationship, so he didn't say yes at that particular time, but at the same time, he also liked that girl, so he also not said no. And after a few days, the boys realized that he also loved that girl, so he said yes after 3 or 4 days, and then they came into relationship. So everything was going very nicely, and they were spending time with each other, and now the relation, they're coming closer and closer to each other. And during that course of time, the boy was gradually building his confidence, but in those era of time, he lost his dream of a UPSC, means to become an IAS officer. The dream just left behind somewhere. So that's how the things were going on. And one day he called the girl. The boy called the girl, and girl didn't pick the phone. So the boy think that might be something, कुछ होगा, कहीं बिजी है, फ़ोन नहीं उठाया. और उसने फिर फ़ोन किया, लड़की ने फिर से फ़ोन काट दिया. और ऐसा 3-4 बार हुआ, और लगभग 3-4 घंटे बाद लड़की ने फ़ोन किया और बात की. दोनों ने बात की. लड़की ने कहा कि शी वॉज बिजी समवेयर. तो लड़के को लगा कि ऐसा होगा, शी वॉज बिजी समवेयर. पर ऐसा अब रेगुलरली होने लगा. हर बार ऐसा होगा कि शी यूज्ड टू कट द फ़ोन, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था. तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट जो होता है ना, वो एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया उस लड़के के अंदर. और एक दिन जब लड़का अपनी ऑफिस से निकल रहा था, तो उसने देखा कि वो लड़की बाइक पे किसी और लड़के के साथ है. एंड द बॉय वाज शॉक्ड, एंड ही आस्क्ड द गर्ल व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. एंड द गर्ल सेड that she is now dating somebody else. And the boy was shocked. His life was upside down, and he just didn't understand why this is happening. उसने कहा, क्यों? We were in a relationship. We were almost for the 4 years. Why you are doing this? And the girl said that you keep on get busy in your work. तुम अपने काम में हमेशा busy रहते हो. तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है. I used to feel lonely, so I need somebody who understands me. And this boy is understanding me. That's why I have decided to move on. और कल मैंने कहा था ना कि एक बार आप किसी चीज़ से दिल से प्यार कर लो, फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो ये जानते हुए भी कि उस लड़की ने उसे धोखा दिया, उसे डिच किया, the boy was not ready to leave the girl, and he just keep trying to get the thing back. और उसने सारा काम छोड़ दिया. He was just giving 100% time to the girl, और he's trying everything, just giving gifts and trying everything. मतलब आप कह सकते हैं कि वो begging वाले situation तक बात आ गई थी. और सडनली चीज़ें बदलती हैं, एंड द गर्ल टेक द यू टर्न, और लड़की उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है. बट वो कहते हैं ना कि शीशे को एक बार तोड़ दो और फिर आप उसे कितना भी ग्लू करने की कोशिश करो, वो एक दरार रह जाती है. सो हुआ वही, एक एलिमेंट ऑफ डाउट हमेशा था. सो
अगेन द गर्ल्स कम बैक, सो थिंग्स वे लुकिंग फॉर सेटल डाउन. लेकिन अब उस लड़की का बिहेवियर वैसा नहीं था जैसे पहले था. अब उसके अंदर वो पैशन नहीं था, वो सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस नहीं था जितनी पॉजिटिव पहले वो उसके लिए हुआ करती थी. बट फिर भी दोनों साथ थे. एंड एक दिन जब दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, एंड आफ्टर द डिनर द गर्ल मूव्ड ऑन, ही सेड ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गो होम. एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आप जैसे कहें, वो अपना फ़ोन भूल जाती है. और लड़का उसका फ़ोन खोलता है और वो देखता है कि लड़की अभी भी उस लड़के से बात कर रही है और कुछ और लड़कों से बात कर रही है. एंड द कन्वर्सेशन भी किसी और कन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी इंटीमेट कन्वर्सेशंस है. एंड अगेन बंदे को रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन. वो लड़की थोड़ी देर बाद लौट कर आती है और वो ऑलमोस्ट उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे. लड़का कहता है कि जासूसी, तुमने मुझसे कहा था दैट you came back and you have left everything behind, but you're still doing the same thing. एंड लड़की उसे कहती है कि बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना. एंड शी जस्ट मूव्ड ऑन. अगेन द बॉय वॉज शॉक्ड, व्हाट हैपन्स. एंड लड़की फिर उसे फ़ोन करके कहती है कि आई वॉज नेवर लव्ड यू, आई वॉन्ट समबडी means having her dream image of a boy and you didn't fit in that image, so I have decided to move on with someone else, or you don't understand me, you don't care वगैरह वगैरह, different kind of shit excuses. अब लड़का पूरी तरह टूट जाता है एंड सब कुछ बिखर जाता है और वो घर आता है. ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग. वो खाने पे टेबल पे बैठा है. उसके फादर उससे कहते हैं कि लेक्चरशिप, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरशिप का पोस्ट निकला है, शुड सिट फॉर द एग्जामिनेशन. बट बॉय वॉज एक्चुअली अंडर एक्यूट डिप्रेशन. और वो सुनता है और नहीं भी सुनता है. वो फिर रात को अपने कमरे में बैठा है और अब उसे लगता है कि इस लाइफ का क्या मतलब. जिस इंसान से उसने इतना ज़्यादा प्यार किया, उस इंसान ने उसे 2 बार धोखा दिया. देयर इज़ नो पॉइंट टू लीव. एंड वही जो हर यूथ करते हैं, मोस्ट ऑफ यूथ करते हैं, दैट ही डिसाइडेड टू क्विट हिज लाइफ, ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. और वो डिसाइड करता है कि आज रात आई विल लीव दिस वर्ल्ड, आई विल क्विट. तो अपने रूम के बेड पे बैठा है उसके, और वो फ़ोन पे अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देख रहा है उस लड़की के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज उसे पता है कि ये आज आखिरी रात है एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू सी एनीबडी एल्स ऑन द कमिंग मॉर्निंग. तभी उसी उसकी डोर पे एक नॉकिंग होती है. उसके फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि व्हाट हैपेंस, व्हाई यू क्राइंग. तो लड़का उनसे कहता है कि आई वॉज नॉट सक्सेसफुल इन माई करियर एंड आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू पुल ऑफ माई करियर फर्दर, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच सैड. सो उसके फादर कहते हैं कि लुक बेटे, सक्सेस और फेलियर लाइफ का पार्ट है एंड डजंट मीन कि तुम इस दुनिया के लिए क्या हो, इस वर्ल्ड के लिए क्या हो, पर मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो. एंड आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम देयर फॉर यू. एंड कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपनी लाइफ से हार गए हो और अब तुम्हें अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सोचना कि तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते हुए निकाल दी ताकि उनका बेटा खुश रह सके, उनका बेटा ज़िंदगी में उन चीज़ों को एंजॉय कर सके जो वो नहीं कर पाए. तो अगर आज तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी अपनी लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो मेरे हिस्से की लाइफ जियो. और वो बोल के चले जाते हैं. और वो कहते हैं ना, वो एक मूवमेंट ऑफ ट्रुथ होता है और अचानक से उसकी सोच बदल जाती है और वो जो सुसाइड का आइडिया है वो कहीं गायब हो जाता है और उसे सही में रियलाइज़ होता है कि हिज लाइफ इज़ नॉट ओनली हिज, उसके पेरेंट्स का भी तो उस पर हक है, सोसाइटी का उस लाइफ पे हक है. एंड वो अपने आंसू पोंछता है और पढ़ने बैठता है. एंड ही सेट फॉर द लेक्चर एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड फॉर द एग्ज़ाम. वो क्वालिफाई करता है और ही बिकम्स अ लेक्चरर. लेकिन वो जो फीलिंग रहती है ना, वो कहीं ना कहीं दिल में अभी भी रहती है. वो कहते हैं ना कि आप अपने सच्चे प्यार को कभी भूल नहीं पाते. बट अब वो लड़का वल्नरेबल नहीं है, अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और फिर वो और आगे बढ़ता है. दैन ही क्वालिफाइड फॉर द यूनाइटेड नेशन के लिए क्वालिफाई करता है एंड ही गॉट टू मच हायर पोस्ट. सो दैट इज़ द थिंग आई थिंक इन लाइफ, दैट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट हम सब की लाइफ में एक पेन है, बट उस पेन को अपना मोटिवेशन बनाना हमें सीखना होगा. हमें सीखना होगा कि हम इतने वर्थलेस नहीं हैं कि किसी एक इंसान ने हमें डिच कर दिया तो हम अपनी लाइफ क्विट कर लें.
दो चीज़ें होती हैं जब हम डिस्ड होते हैं, एक हम क्विटिंग की सोचते हैं, दूसरा हम रिवेंज की सोचते हैं। दोनों गलत है। मेरे ख्याल से बेस्ट रिवेंज यही है कि हम कोई रिवेंज ना लें। आई थिंक हमें ये समझना होता है कि हमारी लाइफ की हर रिलेशनशिप हमसे शुरू होते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या वैल्यू है किसी भी चीज़ की। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट टू कन्वर्ट योर pain, your anger into your motivation, and be be successful. Try to make this as a trigger towards the path of the success. और जाहिर सी बात है, एक आशिक बन के सुसाइड कमिट करके या एक रिवेंज लेके क्रिमिनल बन के आप सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप उस पेन को, उस एंगर को अपना मोटिवेशन बना लें, देन वेरी मच श्योर कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आई थिंक एवरी यूथ, जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहा है, मेरा बस एक ही कहना है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जब आप डिस्ड होते हैं, जब आप डम्प्ड होते हैं, जब आपको धोखा देता है तो आप उसे भूल के एकदम आगे बढ़ जाइए। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये सच है कि जब आप एक बार किसी चीज़ से दिल से प्यार कर लें, उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वो कहीं ना कहीं वो दिल के किसी कोने में वो एक फोल्डर रह जाता है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप एकदम से भूल जाएं, मुझे पता है प्रैक्टिकल नहीं है, बट वो जो पेन है, जो पेन आपको हो रहा है, उस पेन को अपना मोटिवेशन बनाइए और अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाइए। एंड अपने आप को समझाइए कि आप सिर्फ एक लवर नहीं हैं, आप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, एक आशिक नहीं है,